हर सुबह आपके पास में दो चॉइस होती है, एक तो ये कि आप सोते रहो और सपने। Hi, this is Vikas here. Welcome back my YouTube channel Learn Short and Typing with Vikas sir. The Hindu editorial dictation heading is 2 cheers. ये आर्टिकल आपका एस डी जी एक इंडेक्स है होता है उसके, ये आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग है। एस डी जी क्या होता है देख लेते हैं हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस जो ये आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका, काफ़ी पॉजिटिव आर्टिकल आया हुआ है। ऑथर ने बोला है कि इसमें जो भी इंडेक्स जारी किए हैं ऑल ओवर हमने नीति आयोग में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया की क्या पोजीशन रही है उसके बारे में ये आपका आर्टिकल है। ओके, 100 वर्ड पर मैं इसकी डिक्टेशन करेंगे। अभी तक जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बी रेडी, स्टार्ट। इंडिया बेटर स्कोर इन द लेटेस्ट SDG index, but methodological tinkering is cause for concern. India's push in the right direction in achieving sustainable development goals related to clean energy, urban development and health has helped it improve its overall SDG score from 60 in 2019 to 66 in 2021, according to Niti Aayog's SDG India Index 2020-21. Besides SDGs on eradication of poverty and hunger, measures related to the availability of affordable clean energy in particular showed improvements across several states and union territories. The campaign to improve the access of households to electricity and clean cooking fuel has been shown to be an important factor. While this is cause for cheer, the index reveals that there has been a major decline in the areas of industry, innovation and infrastructure. Besides, decent work and economic growth again made worse by the lockdowns imposed by the governments seeking to tackle the COVID-19 pandemic. But the stark differences between the southern and western states on the one hand and the north central and eastern states on the other in their performance on the SDGs point to persisting socio-economic and governance disparities. These, if left unaddressed, will exacerbate federal challenges and outcomes as seen in the public health challenges during the second wave across some of the worst of states. Notwithstanding the improvement in key indicators, the index has curiously made some methodological changes that render comparisons on some SDGs over previous years moot. The SDG on inequality shows an improvement over 2029, but the indicators used to measure the score have changed. The 2020-21 index drops several economic indicators and gives greater weightage to social equality indicators such as representation of women and people from marginalized communities in legislatures and local governance institutions and crime against SC/ST communities. By dropping the well-recognized Gini coefficient measure and the growth rate for household expenditure per capita among 40% of rural and urban populations, instead only the percentage of population in the lowest two wealth quantities
is used the SDG score on inequality terms to have missed out on capturing the impact of the pandemic on health inequality. This could be a significant miss as an UN assessment of the impact of COVID-19 had said that the South Asian region may see rising inequality. Methodological issues on measuring other SDGs have been flagged before, but the lack of adequate measurement of economic inequality seems to be a glaring miss. Like in the first wave, the second wave, with more fatalities, has had similar outcomes on livelihoods and jobs. While the better score for India in its endeavor to achieve SDGs will bring some cheer, governments must work on addressing pressing issues such as increased inequality and economic despair. Full stop. स्टूडेंट ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ द डे 2 चीयर्स। इसको आप टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद आप इसको मैच कीजिए। आज का आपका वर्ड ऑफ द डे सस्टेनेबल, सिंपल सा वर्ड है सस्टेनेबल। आप इसमें ना एक वर्ड ही देता हूँ मैं आपको, सस्टेनेबल वर्ड का आप मीनिंग लिखिए और इसका पार्टिसिपल भी लिखिए कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, फ्यूचर पार्टिसिपल है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, किस रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो इसका विद वर्ड्स विद मीनिंग। इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।